Hey guys, how are you doing? Today in this video we are going to cover Axiom 4 mission. Axiom 4 isn't just another mission to space, it represents a paradigm shift in how humans explore the cosmos. As private companies take the lead in reaching the International Space Station, nations like India are beginning to ride the wave of commercial space collaboration. In this video, we will explore the physics of microgravity, how it differs from zero gravity, why it is crucial for space research, and what it teaches us about the human body, materials, and even life itself. We'll also look at why India's participation matters with Gaganyaan on the horizon and plans for a Bhartiya Antariksha station taking shape, and mission like Axiom 4 are not isolated, they are stepping stone to India's space future. For UPSC aspirants, this topic links directly to GS paper 3, science and technology, strategic security and international collaboration, also overlapping with your preliminary examination. Let's explore the science, the policy and the big picture, and we begin our discussion today with International Space Station itself. I think if everything is clear, so International Space Station is like this, this is a permanent, basically, space station. Let me use the pen first. It is a permanent space station, right? And it is approximately at the height of 400 kilometers from the Earth, right? So in this picture, you can see this is approximately at the height of 400 kilometers. And you guys have done basic course in geography. If you have not done, then these courses are for only those people who have already completed NCERT, right? सबसे पहले आपको NCERTs ही पढ़नी है, उसके बाद जो न्यूज़पेपर है that is going to be helpful for you, right? So if you have done your basic NCERT courses, then you understand, atmosphere is very thin, at the height of 400 kilometer, atmosphere is very thick at the height of, around 15 kilometer, which is your troposphere. Then you have a stratosphere up to height of 50, है ना? तो ये सब आपको पता होगा. At the height of 400 kilometer, there is no atmosphere practically, and therefore it is suitable for scientific experiment. This is one reason why this height was chosen, apart from other reasons we are going to talk, right? So it is a permanently crewed orbital. So what is ISS? It is the permanently crewed orbital laboratory placed in low Earth orbit. It is called LEO. When we talk about space science, which is part of your main syllabus, we will talk about low Earth orbits and all of these things, right? LEO, technically, right? Orbits the Earth at a speed of astonishingly 7.66 km per second. This is very high speed actually. 7.6 km per second. Can you imagine? And it will translate around 28,000 km per hour speed, completing an orbit in 90 minutes or around 16 orbits a day. मतलब ये 16 चक्कर काटता है अर्थ के. कौन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. ओके, सो this speed will, I am going to talk about how come this speed 18,000 kilometer per second, okay, per hour, sorry, because second it is given. And how did we get this one? Because 1 second is approximately 1 over 36, not approximately, 1 minute is 60 seconds, 1 hour is 60 minutes, so 1 second is 1 over 3600, है ना? Basic maths, क्योंकि यूपीएससी की प्रिपरेशन है ना, यही तो ब्यूटी है इसकी. You have to have good understanding of everything, and for CSAT you should be doing basic maths also, right? So 1 second is equal to 3600 hour, right? When you multiply 3600 with 7.66, you get 28,000, right? So this is the idea. The station, अगर आपको station was set up between 1998 and 2011 after initial US-Russia agreement in 1993. It is a collaboration of 5 space agencies. ये याद रखना, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. नासा, है ना, रोस्कोमोस of Russia, ESA of Europe, JAXA of Japan, and CSA of Canada, right? There are 8 spaceships that can be docked and undocked. Docking is a very complex process, by the way. So we might not need to go through a detail of docking. What docking means? उसको उस पे प्लग करना है ना. जो भी आपका स्पेस क्राफ्ट है, जैसे एक्सियम 4 है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? वहां पर अटैच करना पड़ेगा. तो डॉक्स और टू बी कनेक्टेड, है ना. कितने कनेक्ट हो सकते हैं? 8 स्पेसशिप्स कनेक्ट हो सकता है इसमें, है ना, ISS एट वन टाइम.
continuously occupied since 2000. Those activities are going on since 2000, right? And these activities, they include basically scientific activities in microgravity. Okay, फिलहाल तो मैं आपको बता देता हूं कि 280 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं 23 नेशन से. ओके, just a minute, my pen, if it is working well. ISS is composed of 16 pressurized module, and there are 6 Russian, 8 American, 1 European, 1 Japanese, right? कितने modules हैं उसमें? High pressurized modules हैं 16 है ना. Each module has diverse function like scientific, research, crew, habitation, storage, and apart from that, spacecraft control, right? So this is the idea. But my question is this, what kind of impression do you guys have from 9th class science? You have to study 6, 7, 8 and 9 up to 10th, I guess, 6 to 10th class NCERT of science, right? Because there is no division like physics, chemistry and mathematics. You have to do the basic course in science also. Just hold on a second. I think, okay. So let me tell you, there are 6 modules which I want to show you. Just hold on. तो ये जो 16 modules हैं, इस type के modules हैं ना. These are the modules, right? From JAXA, CSA, ESA, NASA, and Roscosmos, right? And this is kind of the outlay of this ISS. But again, you don't need to go through all these things, because these classes are focused classes, है ना. तो हमको जरूरत नहीं इन चीजों की, बस पता होना चाहिए कितने हाई प्रेशराइज्ड इसमें मॉड्यूल्स हैं. 16 आर देयर. ओके, let me tell you the basic science. What is gravity? How many of you have basic understanding of gravity? So gravity is basically, if Newton, suppose this is mass m1, this is mass m2, and if they are at some distance r, say some distance r, then there is a force which acts between them, and this force is always attractive force, and this force is proportional to m1 m2, the product of masses, and inversely related to the square of distance between them. This is the basic idea, right? So when you remove this sign of proportionality, you get a constant m1 m2 divided by r square, and this g is called gravitational constant, है ना. ये universal constant है. This is universal constant. Okay, this is universal constant. And this constant, it turns out that from the Cavendish experiment, the value of this constant is 6.67 10 raised to power minus 11 Newton meter square. You don't need to remember it, but if you can remember, then it is good, right? So this makes this force feeble, 10 raised to power minus 11, very feeble. It is very weak force, weakest of all 4 types of fundamental, है ना. It is weakest force. Again, in previous video, I have okay. So if it is not visible, you can write it somewhere here. Okay, so let me write it again. Okay, I think now it is visible, right? This is universal constant. Okay, so let me tell you, there are 4 types of fundamental forces. I have done it in another video, I guess, when I was talking about neutrino physics. Go through that video, right? There are 4 types of fundamental forces: strong nuclear force, weak nuclear force, then there is gravity, and another one is electromagnetic force, right? EM force, right? This force is very, very important when it comes to heavy bodies like galaxies or planets, है ना. और जब क्या होगा, celestial bodies की बात आएगी, तो 10 raised to power 11 का मतलब है, for example, mass of the earth is around 10 raised to power 24 kilogram, right? This 10 raised to power 24 and 10 raised to power minus 11 के बीच में कितने का गैप है? 13 का गैप है. 10 raised to power 13 का गैप है, राइट? अगर मून की बात करूं तो जो मून का मास होता है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 10 raised to power 22 किलोग्राम, राइट? मतलब आपको 22 zeros लगाने हैं, है ना. This is the basic meaning of this, right? Let me tell you. My question is this, what is weight? What is your impression? अगर मैं आपको एक बात बताऊं, suppose if I were to tell you, suppose if I were to tell you one basic physics, this is important for your, I think, your preliminary examination and your understanding about weight, right? आपको क्या लगता है? What do you think? At the height of 400 kilometer, gravity, the value of g is 0. What do you understand? Basic science, W equal to mg. ये तो सबको ही पता होगा आप में से, है ना. कितने लोगों को, how many of you have impression or understanding
what do you think at ISS International Space Station, which is around 400 kilometer height, what do you think? G is 0, therefore W equal to 0. What do you think? What do you think? Okay, let me tell you one interesting formula. You know, we can prove one formula, we don't need to prove here, है ना. लेकिन आपका जो CSAT है वो डिमांड करता है कि आप जब बीच में मौका मिल रहा है, whenever you get opportunities, you should do some basic mathematics, right? So that you are in touch. थोड़ा सा basic mathematical skill है ना. तो अगर मान लो मैं किसी height h पे हूँ, suppose if I am at height h from the surface of Earth, suppose this is height h, which is from the surface of Earth, height h, okay. The mass of this is me, mass of object is m, mass of object is m, okay. Suppose at this point the value, you know what, let me tell you the formula, है ना. Net force equals to what? It is due to gravity, g mass of earth, m divided by radius of the earth at the surface of earth, okay. Where? At the surface of earth, है ना. ये कहां पर बात कर रहा हूं मैं? बेसिक फिजिक्स की, सरफेस ऑफ द अर्थ पे. तो जब भी आप देखोगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इट सेज दिस नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू mg, है ना. तो ये कितना हो जाएगा? gmem ओवर re स्क्वायर, एंड वंस यू कैंसिल आउट दिस टर्म m, you get gravitational acceleration due to gravity or gravitational acceleration, which is gme over the square of distance. This is re, right? One part, okay. अगर आप सेम लॉजिक को यहां पर लगाते हो at height h, this turns out to be, this must be mass of the earth re plus h over r square, okay. All right, so if it is this one, है ना, अगर इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? इतनी आ गई है. तो मैं अगर इस इक्वेशन को डिवाइड करो, सपोज इफ आई वर टू डिवाइड दिस इक्वेशन, थोड़ा सा मैथमेटिक्स, लेकिन आपको ये मैथमेटिक्स जानने की जरूरत नहीं है. तो आप अगर इसको डिवाइड करोगे तो GME से GME कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड यू आर लेफ्ट विद RE स्क्वायर, एंड डाउन स्टेट्स यू हैव RE प्लस h का होल स्क्वायर, एंड फाइनली इफ RE स्क्वायर इज टेकन कॉमन, सो यू गेट 1 plus h over RE square. You know, this is what I wanted to prove. But let me tell you now, इस इक्वेशन को मैं I am rewriting this equation. Gravity in terms of height h, it is g over 1 plus h over re square, okay. It is 1 over re square, okay. This is it. All right, so this is, you know, this basic mathematics, this is basic algebra. I think, you know, in 9th class you have done it, and now UPSC demands कि आपको इतनी मैथ्स तो आनी चाहिए, है ना. लेकिन अगर आप इतनी मैथ्स कर पाते हो तो मैं आपको बता देता हूं. तो मैंने आपको बताया, आप ध्यान से समझने की कोशिश करना. व्हाट इज हैपनिंग एट दिस हाइट h, this gh is, now you can just remember this formula, okay. अगर मैं आपको बताऊं अर्थ की जो रेडियस है, रेडियस ऑफ अर्थ इज अराउंड 6400 किलोमीटर, है ना. अगर मैं इस हाइट पे भी जाता हूं, इफ आई गो टू द हाइट अप्रोक्सीमेटली टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन यू गेट h इक्वल टू re, re से re कैंसिल, एंड यू गेट 1 plus 1 2 स्क्वायर 4, you know. तो इफ h इक्वल टू से re, which is 6400 किलोमीटर, still you have a strong gravity. You get the value of gravity at this height, g dash equal to g over 4, है ना. तो सोच के देखो, इसका मतलब अगर for international space, you know, let me tell you, for ISS, for international space station, the value of g at this height is what? अर्थ के लिए कितना है? 9 10 सॉरी, है ना. 1 प्लस हाइट कितनी है? 400 किलोमीटर्स. What is 400 किलोमीटर? अगर आप इसको 6400 किलोमीटर से डिवाइड करके इसका स्क्वायर करोगे तो what do you get? Approximately 0 से 0 and 1 over you get around what? 4 16 4 जा 64, right? 4 का अगर इसको कैंसिल करोगे तो 16 से जाएगा, है ना. तो ये आ जाएगा approximately 10 over 17 डिवाइडेड बाय 16 का होल स्क्वायर, ओके. और सिंपली 10 into 16 स्क्वायर 17 स्क्वायर, है ना. तो आपको 16 का स्क्वायर भी याद हो गया होगा, इट इज 256, और 17 का कितना होता है? 269, है ना. कितना होता है एक बार चेक करके देख लेना, है ना. तो ओके, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो, है ना, सपोज इफ यू आर टू कैलकुलेट, तो एक मिनट मुझे इसको करने दो, सॉरी, इट इज ओके, इट विल बी
तो मैंने इसको कैलकुलेट 17, वैसे हमको स्क्वायर याद होने चाहिए बिकॉज मे बी आई एम नॉट इन प्रैक्टिस, but someday later even I am planning to guide you in this course of CSAT also, है ना. तो अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे तो कितना आ जाएगा 2560 over 289, और मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, इसकी वैल्यू 8.7 अराउंड 8.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, है ना. और अगर आपको इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो यू कैन कैलकुलेट 2560 डिवाइडेड बाय 289, है ना, 289. So you are going to get 8.85 and if you take 9.8, तो इसका मतलब क्या है, लेकिन आप फिजिक्स समझने की कोशिश करो. I am going to teach you physics here. At ISS, the value of gravity at ISS is 8.7, approximately 8.7 meter per second square, and the value of G at the surface of Earth exact is 9.8, है ना, और 9.8 को भी छोड़ दो, approximately 10 meter per second square. अब now look at the beauty of this equation, और ये बहुत बेसिक फिजिक्स है. तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं इसको मास से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो वेट कितना हो जाएगा, वेट हो जाएगा ISS पर m इंटू 8.7, है ना, 8.7. तो अगर सपोज करो मेरा मास, अगर अर्थ में मैं 10 का मल्टीप्लाई करूं, लेट्स से इफ आई एम 10 kg वेट, है ना, मान लो मेरा वजन कितना है 100 किलोग्राम वेट, 100 न्यूटन, तो मेरा मास कितना होगा 10 kg, तो आपका वेट कितना हो जाएगा 87 न्यूटन और 87 किलोग्राम वेट इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस. ओके, एंड माय वेट एट अर्थ विल बी अराउंड व्हाट 100 न्यूटन और 100 किलोग्राम वेट, है ना. आपको पता होगा ऑन द सरफेस ऑफ मून द वैल्यू ऑफ G इज 1/6, अर्थ की कंपैरिजन में, राइट. तो 10/6 इज 1.67 अराउंड, है ना. अब क्वेश्चन क्या आता है कि देन व्हाई वेटलेसनेस, व्हाई वेटलेसनेस, तो वेटलेसनेस क्यों है, व्हाई देयर इज वेटलेसनेस इफ ग्रेविटी इज अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द दैट ऑफ द अर्थ, एटलीस्ट अगर इफ आई वर टू टेक इट 9.8, तो 9.8 लोगों तो कम से कम 90% और अ बिट लेस अराउंड 89 और 99 90% ऑफ द अर्थ, then why weightlessness? This is the most important question. And then you should understand what is the concept of weight. Weight, अगर मैं इसको बड़े बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिख दूं, weight is not because of gravity, not, if this color is not visible, not because of gravity. Weight is not something because of gravity, it is because of something is against gravity. Something stops you falling, we feel weight. Something stops you falling into earth, है ना, which is what, surface, the force acting by surface, and that force is called, basically this is called normal force, normal reaction, that is the basic funda of weight. So suppose this body pushes you, right, for example, बहुत बेसिक साइंस में बहुत लंबी क्लास चली गई है, लेकिन फिर भी this is the basic science, this is earth, which is pulling you, mg, but if there is no surface you do not feel weight. You feel weight because of this force which is applied by the surface and which is called technically normal force. Normal mean at 90 degree, it is acted perpendicularly from the surface, from the point of contact, and this normal force is the measure of weight. So what is happening actually, let me tell you with an example of elevator. Suppose there are 3 cases of this elevator, let me tell you 3 cases, at least 3 cases. Elevator at rest, elevator moving up and down. Okay, suppose this acceleration is 0, तो 2 केस हो सकते हैं. elevator is either in the state of rest or uniform motion. Uniform motion, again these are the terminology. Uniform motion का मतलब होता है constant speed, है ना, it is moving with constant speed. Then the weight is only mg, there is no extra weight. But suppose it is accelerating upward, acceleration is, अगर moving up, है ना, अगर ये हमारा elevator है, if it is moving up with positive acceleration, it is accelerating, okay, acceleration. If it is moving up with acceleration a, then
a pseudo force, on this body because of technically we call it, non-inertial frame, a force act against this, the mass of this, which is ma naught. So effective weight will be what? Effective weight will be mg plus ma naught. तो जब भी आप एलिवेटर में गए होंगे तो आपको अपना वेट क्या आएगा? ज्यादा महसूस होगा, थोड़ा सा ज्यादा महसूस होगा, है ना? एंड विच इज इक्वल टू द योर मास एंड एलिवेटर, है ना, स्पीड ऑफ एलिवेटर. अब इसको समझो. सपोज दिस लिफ्ट इज गोइंग डाउन साइड, है ना, डाउनवर्ड, ऊपर नहीं जा रही बल्कि कहां जा रही है? डाउन, नीचे आ रही है ऐसा, है ना. एलिवेटर गोइंग डाउन, है ना. तो अगर इस डायग्राम को थोड़ा सा और मोटा कर दूं, अभी देखो, अभी शायद ज्यादा समझ में, है ना. दिस एलिवेटर इज गोइंग डाउन विद एक्सेलरेशन ए, है ना. तो इस पर एक फोर्स लगेगा, एज आई हैव टोल्ड यू, व्हिच इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ दैट फ्रेम. फ्रेम मीन जहां से हम मेजर करते हैं, है ना. तो इसको अपोजिट फोर्स कौन सा लगेगा? ma naught. एंड दिस कंडीशन इज मूविंग डाउन. दिस एलिवेटर इज मूविंग विद डाउन, है ना. तो इस पे जो इफेक्टिव वेट होगा वो क्या होगा? mg डाउनवर्ड, ma naught अपवर्ड, है ना. mg माइनस, और यू कैन से mg माइनस a naught. ओके, है ना. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. सपोज इसकी केबल टूट जाए, भाई ये जो आपका एलिवेटर है इसका क्या हो जाए? केबल टूट जाए. सपोज समवन ब्रेक्स द केबल, दिस इज द केबल, एंड आपके पास कोई कैंची लेकर आया, और कई बार ऐसे अनफॉर्चुनेट इवेंट्स भी हो जाते हैं, है ना. ये कैंची लेकर आया और इसको काट दिया, कट इट डाउन. तो ये क्या करेगा? कट इट डाउन, है ना. अगर मैं एयर ड्रैग को मिनिमम मान के चलूं तो जो इस पर जो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा? भाई ये कौन से एक्सेलरेशन से नीचे आएगा? दिस विल गो डाउन विद एक्सेलरेशन a इक्वल टू प्लस g. तो इस कंडीशन को, जो कंडीशन मैंने आपको यहां पर बताई, दिस कंडीशन will give you what? The effective weight, what you are going to perceive, effective weight will be what? mg minus a. The value of a is what? अगर आप देखोगे mg minus g equal to 0, you feel weightlessness. तो this condition is called basically free fall motion. What kind of motion is this? This is called free fall motion. Or this is what is happening actually. This is what is happening here. Okay? तो जो ये ISS है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, it is free fall motion. It is in free fall motion, है ना, like elevator. ये free fall motion में है. तो free fall motion में जो weight होता है वो zero होता है. There is no weight. You do not feel any weight. Okay? There is only microgravity, they say. एंड माइक्रो, यहां पर जो माइक्रोग्रेविटी है वो किसके कारण है? स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर ड्रैग, है ना. किसके कारण? एयर ड्रैग के कारण. एयर ड्रैग या एटमॉस्फेरिक ड्रैग फोर्स, है ना. टाइडल ग्रेडियंट के कारण, टाइडल फोर्स के कारण, है ना, टाइडल फोर्स के कारण. मे बी जो वहां पर इक्विपमेंट्स हैं उनमें वाइब्रेशंस के कारण. दिस इज द फिजिक्स. सो इफ अ बॉडी इज इन अ फ्री फॉल मोशन, or moving under free fall condition, then you do not feel any weight. It is like, as I have given you example, an elevator which is going downward, but suddenly, if this is cut it down, if this breaks, ये जो rope है रस्सी कट जाए, है ना, तो ये free fall motion में आएगा. तो free fall motion का मतलब है this normal reaction reaches 0. If normal reaction is 0, then there is no weight. You do not feel any weight. That is the condition of weightlessness. तो पहला, अगर आपके पास कोई सवाल बना के देता है कि क्या वहां पर at the height of 400 kilometer, which is the height at ISS is placed, if the value of gravitational acceleration 0, not at all. Gravity is not 0 at all there. Gravity is as strong as 90% of the Earth. That's the basic idea. Okay? Chaliye. So if I have understood the science, now let me tell you why Indian experiments in ISS, it is important, So it is important, this group, Captain Subhanshu Shukla, this guy is traveling to the ISS with 3 other astronauts in this mission, है ना. तो अभी कुछ दिन में ही वो अनडॉक करने वाला है, I guess on 15th of this July, right? Okay. These microgravity research experiment proposed by Indian scientists and R&D laboratories across the countries, and which are like this: impact of microgravity radiation in ISS on edible microalgae. What they are doing actually? They want to produce this microalgae, right? Microalgae. तो ये भी ध्यान रखना है ना.
ओके, स्प्राउटिंग सैलड सीड्स इन स्पेस रेलेवेंट फॉर क्रू न्यूट्रिशन। वो देखना चाहते हैं कि ऐसी माइक्रोग्रेविटी कंडीशन में हाउ इज स्प्राउटिंग टेक्स प्लेस, यू नो, हाउ डज दिस टेक्स प्लेस। ओके, okay, then impact of microgravity on food crop seeds. Okay, food crop seeds, analyzing human interaction with electronic displays in microgravity, effects of metabolic supplements on muscle regeneration under microgravity. Okay, तो माइक्रोग्रेविटी में जो मसल्स रीजनरेशन होता है, पहले डिजनरेट होंगी फिर रीजनरेशन होगा, कैसे होगा, राइट? सर्वाइवल ऑफ रिप्रोडक्शन, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन ऑफ, यू नो, RNA ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूटार्डिग्रेड पैरामाइक्रोबीटस, अब माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक एनिमल है ये, है ना, इनके बारे में वो देख रहे हैं कि वहां पर रिप्रोडक्शन कैसा होता है, आरएनए ट्रांसक्रिप्शन कैसा होता है, ग्रोथ ऑफ प्रोटियोमिक्स, स्पेसिफिक सेल प्रोटीन्स जो होती हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोटियोमिक्स, राइट, एंड देयर रिस्पॉन्सेस इन साइनोबैक्टीरिया ऑन यूरिया नाइट्रेट एंड माइक्रोग्रेविटी। तो दिस इज द इंडियन एक्सपेरिमेंट इज देयर गोइंग ऑन। ओके, ओके, फ्रॉम द इंडियन साइड। ओके, ऑलराइट, so let me tell you, so this mission is important, you know, Prime Minister has said we have to take mission Gaganyaan forward, right, build our space station and also land Indian on the moon। तो इसके बारे में बात हो रही है ना, just hold on for a second, I think there is power cut। So I guess you have understood this, you know, and Prime Minister is saying about this Gaganyaan mission, okay, और मैं आपको बता देता हूँ, on February 27, 2024 India got its 4 designated Gagan Yatris, all group captain in IF, सबके सब क्या है, group captain है, and one Subhanshu Shukla which is on this mission, you know, Axiom 4, Prashant Nair, Ajit Krishnan, Angad Pratap, okay, and there will be part of the first crewed mission। और उनका स्टेटस क्या चेक होता है, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एंड जेनेरिक ट्रेनिंग कंप्लीटेड हो चुकी है उनकी। शुक्ला ट्रेवल्स टू ISS ऑन Axiom 4 मिशन। ओके, और मोस्ट इंपोर्टेंटली तो व्हाट ही हैज गॉट एक्चुअली इन दिस मिशन, शुक्ला हैज गॉट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यू नो, he has gained first hand exposure, you know, first hand exposure or experience in critical aspects of human space flight, okay, for example, like what, living, walking, right, living, walking in almost zero gravity। I have talked you about zero gravity mean absence of normal reaction, normal force, and which is the case of free fall motion। Okay, technically free fall mean exclusively only gravity, there is only one force, exclusively gravity, right? Number 3 is handling complex space maneuverings, right? So handling, what he is going to get, handling complex space craft system, है ना, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम होगा उसको हैंडल करना। रिस्पॉन्डिंग टू कंटिंजेंसीज, है ना, व्हाट ही इज गोइंग टू हैव, रिस्पॉन्डिंग टू कंटिंजेंसी, है ना, अगर कोई कंटिंजेंसी आ गई तो उसमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है ना। ओके, और मोस्ट इंपोर्टेंटली विच आई शुड बी राइटिंग विद अनदर कलर पेन, परफॉर्मिंग, विच आई हैव टॉक्ड यू, परफॉर्मिंग इंट्रिकेट डॉकिंग, है ना। कहने का मतलब है अपने स्पेस क्राफ्ट को किसके साथ जोड़ना, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ जोड़ना, राइट। एंड दिस डॉकिंग प्रोसीजर इज रियली वेरी कॉम्प्लेक्स, यू नो, समटाइम्स वन हैज टू अबॉर्ट द मिशन आल्सो। ओके, और फिजियोलॉजिकली एंड साइकोलॉजिकली, और अदरवाइज यू कैन से फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल adaptations, okay, this is okay, right? Okay, so if this is the aspect of this, okay, and let me tell you about India's Bhartiya Antariksha station, which is targeted around 2035, है ना। तो 2035 तक भारत का क्या होगा, India's space station for microgravity research, which is called as Bhartiya Antariksha station, okay।
to sustain scientific research, right? The procedure precursors उसके पहले क्या होने वाला है? Sending 5 modules by as many launchers, first in orbit by 2028, docking of the module to build space station, right? Okay, तो ये ध्यान रखना। और एक याद रखना, उसके बाद क्या प्लान है 2040 में? लैंड फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट ऑन द मून और क्रूड, और अदरवाइज इट इज कॉल्ड क्रूड लूनर मिशन, राइट? क्रूड लूनर मिशन, it is written crewed lunar mission. Okay, so Chandrayaan 4 will with expected launch in 2027-28 to bring back lunar samples, then Chandrayaan 5 a joint mission with Japan to study the moon's potential to host humans. Okay, this is what is going to be in the next 10 to 15 years. Okay, 25 is there, so 10 to 15 years, that is what is the plan. Let me quickly wind up this video with these things. Okay, a new era of space exploration. This is for your UPSC mains examination. Now I am focusing on mains part, and in mains part you could be asked some questions. I am going to tell you. Privately funded space stations, scientific and commercial potential, है ना? The emergence of privately funded space missions such as Axiom 4, right, marks a paradigm shift for government dominated exploration to a commercially driven model. Just remember this. Microgravity research critical for biotechnology, material science, pharmaceuticals and advanced manufacturing. Then international collaboration. For example, countries like India gain access without investing billions in independent stations, right? जो अभी फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिला है सुभांशु शुक्ला जी को, है ना? स्पेस इकोनॉमी डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ स्पेस बेस्ड सर्विस इन टेलीमेडिसिन, रिमोट सेंसिंग, एजुकेशन एंड जीरो ग्रेविटी मैन्युफैक्चरिंग. द प्राइवेटाइजेशन ऑफ LEO, which is low Earth orbit infrastructure, can democratize space research and lower the cost by a reusable tech and shared platform. That is one aspect of this. Okay, quickly, space tourism. This is also important, and human expansion in space. Missions like Axiom 4, which include civilians and commercial astronauts, pave the way for what? Space tourism industry, है ना? Which is projected to be worth of billions in coming decades. Human adaptation studies, understanding physiological and psychological effects of space travel is essential for deep space mission to moon, Mars, etc. Right? Development of civilian space habitats and orbital station, transitioning from exploration to permanent human presence. इसके बारे में भी वहां पर रिसर्च की जाएगी. This also feeds into India's own ambition via Gaganyaan and Bhartiya Antariksha station. And finally, I am going to talk about economic and geopolitical dimension. It says the global space economy is projected at according to one study to surpass $1.8 trillion by 2035. Private players are key enablers to that growth. Strategic autonomy, countries with private public synergy like the US gain resilience in satellite communication, surveillance and defense, right? So some kind of autonomy is there, right? Tech leadership, private missions accelerate innovation, putting pressure on nations like India and China to adapt regulatory, R&D and industrial frameworks. And finally, geopolitical leverage, nations hosting private space infrastructure like US with Axiom influence global space governance, norms and trade. Okay, so we wind up this video. Again, कोई भी वीडियो अपने आप में कंप्लीट नहीं है for the preparation of UPSC. You have to study NCERTs first, and then once you start reading newspaper, apart from your optional paper, you have to read newspaper regularly every day. And not only you, I am updating myself, you have to update yourself, and we have to study daily, right? You can write few answers for the time being, and these are for mains answer writing practice. Okay, तो आपको mains answer writing practice, I always tell you one thing, जो ये प्रोसेस है यूपीएससी प्रिपरेशन की, इट इज एन इंटीग्रेटेड प्रोसेस. यू हैव टू प्रिपेयर in a way that you pass in one go. Otherwise, at any stage if one fails, it means one fail finally, right? तो अगर आप मेंस का प्रिपरेशन और प्रीलिम्स का प्रिपरेशन एक साथ करने का मतलब है, एटलीस्ट यू शुड बी लुकिंग फॉर दोज एरियाज व्हिच आर कॉमन, है ना? तो जनरल साइंस इज अ कॉमन पार्ट, एंड इन जनरल साइंस यू कुड राइट सम आंसर्स आल्सो एट द सेम टाइम. You don't need to write the best answer, you need to practice writing basically, right? What distinguishes private space mission like Axiom 4 from traditional government led mission? Try to find the answer of these questions, you will learn a lot. Okay, so Axiom 4 और traditional government led missions में क्या difference है? You have to understand it, as
फॉर एग्जांपल राकेश शर्मा है ना, जब रसिया की मदद से कहां पर गए थे 1984 में स्पेस में गए थे. तो यू हैव टू सी द हिस्ट्री, यू नो. ओके, व्हाई इज माइक्रोग्रेविटी रिसर्च कंसिडर्ड वाइटल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्पेस मिशन लाइक एक्सियम 4. अब ये माइक्रोग्रेविटी रिसर्च, यू नो, एज दे आर टॉकिंग अबाउट, यू नो, माइक्रो एल्गी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, यू नो, you have to make, you know, you have to understand it, what is the meaning of this, right, है ना, कि क्या मतलब है माइक्रोग्रेविटी से, क्या होगा. 150 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करना. अभी रिसेंटली इट वाज इन न्यूज, राइट, एवरी डे दे आर, यू नो, अपडेटिंग समथिंग अबाउट what Shukla's mission is going on there, right? How does India's Gaganyaan mission compare with recent international human space flight program? अब तो जो space के लिए जो fight है, competition है, that is also growing, right? Another question you should write in 250 words. How does the commercialization of outer space impact global space governance, resource sharing, and India's strategic interest? What role should regulatory bodies play in the new space economy, right? You have to write this. And the last question for you, discuss the implication of including an Indian Air Force pilot in commercial space mission like Axiom 4. How can this experience contribute to India's future in human space flight and indigenous space station development? Okay, so I wind up this video today here. I guess it was a useful video for you. And what I am saying, you know, you have to read newspaper again and again. I have talked about basic science of weightlessness or gravity and what is microgravity. So thank you so very much. If you like this video, don't forget to hit like, share button. And if you have not yet subscribed the channel, please do subscribe. See you guys until next time. Thank you so very much.